I would now like to request our guest of honor, Dr. R.S. Sodhi, to please address us. Namaskar, good morning. आज इंडियन डेयरी एसोसिएशन वेस्ट जोन बॉम्बे ने जो नेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज किया ऑन द रोल ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इन हेल्थ एंड डिसीज प्रिवेंशन, आई फील वेरी प्रिविलेज्ड and I am honored that today in this seminar we have got Padma Shri Dr. V. Mohan ji to tell us about the positive aspects of milk which we our parents, our grandparents, everybody is having from last so many centuries. I am very happy that Dr. Minesh Shah, Chairman NDTP, is also joined online. I am also thankful to Dr. J.B. Prajapati, Chairman IDA West Zone, for giving this opportunity, and also Dr. J.V. Parekh, Vice Chairman. I am very delighted to see all the dignitaries of West Zone from other parts of India dairy industry, all the faculty and the head of the institutions of other colleges whose students are present, all the faculty and very, very young students, boys and girls who want to know about कि दूध पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए. I think by the time evening you will come to know exactly कि जो आपके माँ बाप या उनके माँ बाप जो वो करते थे बिल्कुल सही था. आजकल के बच्चे जनरली सोचते हैं कि जो हमारे पेरेंट्स करते हैं हमको उनसे अलग करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन डेयरी एसोसिएशन for participating in this very, very important and apt seminar at Bombay, and I am thankful to Dr. J.B. Prajapati and his team for taking this initiative. अभी देखिए, today we have got in this, I was going through the list here also. I mean, we have got the best of the experts, scientists, opinion makers, or the dignitaries who can tell you best about the good points or attributes of milk. I am not a scientist, और ना ही मुझे कभी जिंदगी में कभी गोल्ड मेडल मिला है. हमारे को तो वही कभी मिट्टी का भी मेडल नहीं मिला. मे बी डॉक्टर प्रजापति मेरी डॉटर को मिल गया. I feel happy, चलो हमको नहीं मिला, हमारे बच्चों को मिल गया. Thank you. Well, so I will not be able to tell much about for the subject for which today's seminar is there. I'll give my opinion as a layman or as an outsider. But I can tell you, I have passed my last 41 years in Indian dairy industry. So अगर आप कुछ भी पूछे दूध, यू आस्क एनी क्वेश्चन, आई विल ब्रिंग यू टू मिल्क. घूम फिर के मैं दूध पे ले आऊँगा आप, क्योंकि वही हमारा फोटे. आई कैन टॉक ओनली अबाउट मिल्क, मिल्क, मिल्क. सी, नाउ कमिंग टू द मिल्क, which is an important part of a dairy, most important ingredients. And dairy is a part of our food. If I tell you today, India economy, which is now today we say is around $3 trillion. $3 trillion के हम बोलते हैं, जो कि आने वाले टाइम में another 5 years we say it will be $7 trillion or $10 trillion and will become number 3 economic power. The biggest sector in that, the biggest contributor in Indian economy, if any sector, it is the food, around $550 billion. 45-46 lakh crore hai. And it is growing and growing at
every year with the increase in population and increase in spending. Around 6 to 7% per annum it is growing. Out of that but unfortunately and now fortunately for the youngsters and the today's professional, out of that 45 lakh crore whatever is food industry is there, only 10% is organized, 90% is unorganized. So that consumption of food is increasing because of more number of stomachs, more money in the top pocket people are spending, and the shift from unorganized to organized is bringing very, very healthy growth in the organized food industry. And we all are part of that. And out of that organized of around 5 lakh crore, biggest is dairy, around 2.8 lakh crore. Still, baki log to abhi in other segment is happening gradually. Now, if you see in food, we eat lot of food. आप cereals खाते हैं, fruits and vegetables खाते हैं, दूध पीते हैं, अंडा खाते हैं, meat, fish, दुनिया भर की चीजें खाते हैं. If I tell you which are the segments in food which are growing, if you take last 50 years production or consumption data, because India में whatever we produce, more or less we consume, little bit, I mean some part of that only cereals we export, बाकी food में ज़्यादा हमारा export is negligible. So last 50 years, cereals, which are basically carbohydrates, wheat or paddy वगैरह, their production has multiplied by 2.8 times, or you can say 3 times in last 50 years. जो 50 साल पहले जितना होता था उससे 3 गुना ज़्यादा होता है. Last 50 years में fruits and vegetables, which now gradually consumption increasing, its production has multiplied by 5.5 times, 5.5 गुना multiply हो गया. तो cereal से double production. More or less आप देखें आज fruits and vegetable का production is equal to paddy wheat put together. Now coming to the milk for which we are today, and milk production in India has multiplied 10 times in last 50 years. So cereal से 3-4 गुना. Similarly, other animal-based food, poultry and meat, you know how much that has multiplied? 23 times. Fish, 12 times. So overall food has multiplied 4 times. So what is this showing? That in food, consumption is increasing, but more demand is coming for, beside fruits and vegetables, animal-based protein, animal-based fat and other things. So that is the basic thing. Now, coming to the dairy or milk, what India has done. And I think we all feel proud of it, that last 10 years, we have multiplied by 10 times. About 50 years back, we were producing only 24 million metric ton. In 1997, exactly after 25 years, we multiplied 3 times, 71 million metric ton. And then again, last year it was 222. So every 25 years, milk production multiplies 3 times. Every 25 years. And let me tell you, 50 years back, India was a milk deficit country. आप लोगों को तो पता नहीं, आपके पेरेंट्स से भी पूछेंगे तो शायद उनमें से भी कुछ को पता नहीं होगा. I remember during my childhood days, we used to stand in a queue in Delhi with a token, aluminum token, to get 2 bottles of milk from Delhi Milk Scheme. And that too after waiting 2 hours, पक्का नहीं था आपको मिलेगा नहीं मिलेगा. Those are milk deficit days. And today, India has become world largest producer. 50 years back, we were producing 1/8 of what is the total milk production in Europe or 1/3 of USA. Today, India, we are producing more than the double than what USA is producing, around 30% more what Europe is producing. And that all has happened because 50 years back, India's farmers, policy makers, and political leadership decided that we have to become Atmanirbhar in milk. And Atmanirbhar was that simply
that Amul model, which Shri Tribhuvan Das Patel and Dr. Varghese Kurian started 1946 and 48. What is that? Simply, the farmers should not produce milk, they should own the whole supply chain. And that was replicated all over India. And we became what we are today. And one more reason for continuous, I mean, if you see India's milk production is growing at the rate of around 6%. World milk production is growing at 1.5%. Whatever growth in world milk production is coming is mainly because of Asia, that is India, Pakistan and other countries. And reason is simple. India's food supply chain or milk supply chain is the most efficient supply chain. That what farmers get and what consumer pays, the gap is minimum. आप जितना 1 लीटर दूध का भाव यहाँ पे बॉम्बे में देते हैं, इसका 70 to 80% किसान को मिलता है. If you go to Europe, you go to USA, the farmers get only 1/3. So India's supply chain is very efficient, and for that reason farmers are happy getting good price, consumers are paying very reasonable price, and both are happy. So farmers produces more, consumer is consuming more and more because it has become very affordable food. So production is growing and consumption is growing. Now coming to in food, because आप लोगों को होगा कि what is happening, what is the future of food, because everybody, whichever industry, whichever sector you meet people, आपको लगता है कि इसका आगे 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद क्या होगा और क्या changes हो रहे हैं. So let me tell you, if I have to talk about the trends in the food, food is one category where the least or minimum changes are. आप याद कीजिए, अब जब बचपन में आपकी थाली में क्या था, आज क्या है, सेम है, दाल रोटी सब्जी. Only process of making, process of cooking, process of service, or process of buying ingredients, process of packing ingredients have changed. But basic, what food goes into inside is more or less same. ठीक है, once in a while, जब हमारे बचपन में हम महीने में एक बार डोसा खा के अपने को सोचते थे हमने बहुत बड़ी चीज खा ली, बाद में आज चाइनीज आया, बाद में मैक्सिकन आया, बाद में इटालियन, दैट इज वंस इन ए वाइल. बट बेसिक दाल रोटी सब्जी कड़ी वो वही है. So in food changes happen, madam. And other thing which in food is very important, a lot of people ask me, आप अभी हम बात करेंगे पूरा दिन plant based, vegan और दूसरी चीजें. I'll also little bit talk my views. देखिए, in food I tell everybody, lot of startups come to me कि साहब ये हमने ये नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, ये चलेगा, ये इस कैटेगरी के लिए ये इतना निश है. I tell one thing, basically food will be ageless, food will be there not today, 10 years, 20 years, if it meets criteria. One criteria, 3 major parameters. And what is that criteria? One is food has to be tasty. No, I mean, if your food is not tasty, आप कुछ भी बनाइए, कुछ भी बोले कि इसमें कैलोरी कम है, इसमें लैक्टोज फ्री है, इसको खाने से आपका ये हो जाएगा. इफ इट इज नॉट टेस्टी देन इट्स लाइक ए मेडिसिन. ठीक है, आप जितना मार्केटिंग करेंगे जितना वो थोड़ा बहुत बिकेगा. अब देखिए समोसे पकौड़े कितने भी लोग उसके माइनस में बोले, कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, आप जरूर खाते हैं. सो फूड हैज टू बी टेस्टी. फूड सेकंड पैरामीटर, फूड हैज टू बी न्यूट्रिशियस. आप क्यों खाते हैं फूड? It has to meet your nutritional requirement, your body requirement. And third very important parameter for India, which is because India is a country of lower middle classes, food has to be affordable. If any food you want to make, any food you want to give, you want on market, if it meets this criteria, means this food has got future. Otherwise, if that food does not meet this criteria, it's not a food, it's a fad. आज है, कल फैशन की तरह दूसरा आके उसको खत्म कर देगा. सेकेंड,
thing which we have noticed in India with the prosperity coming more, spending power coming more, urbanization coming, food is shifting from mainly India carbohydrate diet to protein and fat rich diet. That is why I said animal based food or the edible oil or fruits and vegetable is growing more and more. The third trend which I have seen is it was happening, change was happening in food or dairy gradually. The consumer was shifting more from the unpacked, unbranded loose to branded or packed form. It was happening at X rate. But during COVID, that accelerated to 3x or 4x. 3 से 4 गुना हो गया. So now consumer want to buy more of branded and packed. आज आप किसी शॉप पे चले जाइए, किसी मॉडर्न शॉप पे जाइए, आप रियलाइज करेंगे कभी आपने सोचा नहीं होगा ऐसे प्रोडक्ट अभी ब्रांडेड फॉर्म में मिल रहे हैं. चाहे वो जैगरी पाउडर हो, चाहे वो डोसा मिक्स हो, जी अब दुनिया भर की चीजें आप इमेजिन नहीं कर सकते, किसी ने सोचा नहीं था. So what is happening? Packed, branded, but third thing which I am also very surprised to see, because I've been in the food market for the last 41 years, is consumer are now more shifting towards local and trustworthy brands. आप किसी फूड में चले जाइए, देयर विल बी वन नेशनल ब्रांड उस मार्केट में होगा, 1 2 3 4 नेशनल ब्रांड, तो कम से कम 5 से 10 लोकल ब्रांड्स होंगे, चाहे वो बिस्किट्स हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो मिठाई हो, चाहे वो नमकीन हो, एनीवेयर. एंड आई हैव सीन द शेयर of locally produced branded products is increasing vis-a-vis national player, maybe because of they are more fresh, because consumer now want to buy more and more fresh, कि कल का बना आज मुझे मिलना चाहिए. Maybe it meeting more the taste requirement, or maybe that they are able to reach to the smaller shops. I have also seen, because I have been marketing branded dairy products, the growth of branded products is more growing in the tier 2, tier 3 cities, smaller cities. So there are number of, these are the things which is happening. We know that how food is distribution wise also changing from general trade to modern trade or e-commerce, which is around not 20% of the total. In bigger city like Bangalore, 70% of food is sold now through online or modern trade or stores. So this is the very change is happening, but basic food is same. It has to be tasty, it has to be nutritious, and it has to be affordable. So these are the things. Now we know that in dairy, milk, food, future is there, सब कुछ है. But what are the challenges? The biggest challenge is आप में से जो लोग बैठे हैं, सबको फूड खरीदना है, खाना है. आप कोई फूड ग्रो करना चाहेगा? My parents in our childhood day was in villages. We used to grow food. हम खेत में काम करते थे. पर मुझे नहीं लगता कि हमारे फादर के 4 बेटे थे, 4 बेटों में से जितने बच्चे कोई गांव में नहीं है. ये तो हमारे जमाने की प्रॉब्लम. बिगेस्ट इन इंडिया और वर्ल्ड ओवर इज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ फार्मर्स, the youth, after they get educated, nobody wants to grow the food. Everybody wants to consume it, और उसमें बढ़िया चाहिए. So biggest challenge is how we can lure, how we can motivate the next generation of farmers to continue in the food growing, चाहे वो खेती हो, चाहे वो डेयरी हो, चाहे वो फिशरी हो, चाहे वो पोल्ट्री हो. आप इमेजिन कीजिए during this Ukraine war or during COVID, सबसे biggest challenge country, what countries were facing? Food security था. आप श्रीलंका देखिए, पाकिस्तान देखिए, इजिप्ट देखिए, जो countries food wise secure नहीं थे, they are the maximum law and order problem and maximum inflation. So imagine कीजिए in a country like India which is 140 crore, if food wise we are not secured, what is going to happen? And during COVID you have seen, सुबह से लेके शाम तक एक टॉपिक जो कॉमन था
across all houses was क्या खाएंगे, कहाँ से खरीदेंगे, कौन खाना बनाएगा, कौन खाने के बर्तन साफ करेगा. एक ही कॉमन टॉपिक था. So, and reason is, देखिए फूड में क्या, फूड इज सप्लाई चेन इज सच ए थिंग वेयर masses are both the side. So, if we want that tomorrow our children should get good food like we are be getting pure food, we have to see the farmer who is growing it or his generation, they are commercially benefited. If we have to pay, generally क्या ये हो गया है अक्रॉस वर्ल्ड और इंडिया में भी कि खाना सस्ता होना चाहिए, दूध के दाम नहीं बढ़ने चाहिए, शुगर के दाम नहीं बढ़ने चाहिए, सब्जियों के टमाटर के भाव नहीं बढ़ने चाहिए. ठीक है, पर दाम नहीं बढ़ेंगे अगर तो किसान की इनकम कैसे बढ़ेगी? हम चाहते हैं हमारी इनकम 10% बढ़े पर सब्जी के दाम 10% नहीं बढ़े. तो इमेजिन कीजिए, तो हु विल ग्रो? उसका भी बच्चा शहर में आके वो डिलीवरी बॉय बनना पसंद करेगा इंस्टेड ऑफ गांव में रह के सब्जी उगाए. सो वी हैव टू, आई थिंक, एंड होल वर्ल्ड इज रियलाइजिंग, अभी भी हर चीज में इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया. पूरे वर्ल्ड में जो कंट्रोल में नहीं आ रहा फूड इन्फ्लेशन, इंडिया में भी, बिकॉज उगाने वाले कम हो रहे हैं. सो वन इज दैट. द अदर एरिया इज आई थिंक in dairy, which is very important, is because today we are producing 222. If you go by last 25 years, in the next 25 years, we'll be producing 3 times, 628 million metric ton. With not, and we cannot afford more cattle or the buffalo. So we have to improve the productivity, and productivity can be improved by 2 ways, by better feeding and better breeding. इतनी फीड कहाँ से लाएंगे? So how to divert जो आज किसान नॉर्मल क्रॉप करता, फॉडर कैसे करो? हाउ टू गेट दैट मच ऑफ फीड, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज. बाकी देखिए, देयर आर 2 टॉपिक्स विच आई थिंक आई विल कवर, देन आई विल वाइंड अप. है ठीक है? Yes, please. Just because those topics are basically, one is sustainability and second is the plant based. देखिए, world over, sustainability word is being talked at all the platforms. Unfortunately, what has happened, sustainability word has been, I say, hijacked more by the environmentalist. अगर आप किसान से पूछें कि या किसी वर्कर से पूछें कि what is you mean by sustainability, उसके लिए sustainability means livelihood. You ask sustainability to any national leader, किसी भी आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से पूछिए, वो बोलेगा सस्टेनेबिलिटी मीन्स फूड सिक्योरिटी एंड द एम्प्लॉयमेंट. यू आर सस्टेनेबिलिटी टू एनी बिजनेसमैन, वो बोलेगा सस्टेनेबिलिटी मीन्स मेरा साल के एंड में या क्वार्टरली मुझे प्रॉफिट दिखना चाहिए जो भी मैं बिजनेस करूँ. पर ये क्या जो इन्वायरमेंटलिस्ट के लिए सस्टेनेबिलिटी वर्ड है, विच इज वेरी रेलेवेंट. आई एम नॉट डिनाइंग, we all have to see that whatever we are doing, what we produce, what we eat, it has to be environmentally friendly. And for that, let me tell you how dairy is the most, Indian dairy is the most sustainable way. अब देखिए, आप देखा पूरे वर्ल्ड में जो है ना, एग्रीकल्चर इज कंट्रीब्यूटिंग ओनली 11% ऑफ द टोटल जो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन में होता है. And out of that, around 65% is by the cattle, जो दूध देने वाले होते हैं. Maybe because of when they eat and they release methane, or maybe because of the dung. But if you go India, देखिए पूरा this whole universe is owned by everybody. India's contribution to the world, जितनी भी greenhouse gases, only 5%. We are 12% of the world population, but we contribute only 5%. USA 27% to the emission. Sorry, USA 18%, China is 27%. India में per capita emission is only 1.84 ton. USA is 10 times more. You tell me who has to reduce? And I was reading one article of
Sunita Narayan, the environmentalist, she has written very well. Sustainability is a concerned area, and agriculture is very important. But one has to see the emission. There are two types of emission. One is emission for livelihood. एक छोटा किसान, एक छोटा दूध वाला जिसके पास 2 या 3 गाय हैं, he or she is not emitting because of something earning money, is for livelihood. And there is emission for the luxury. आज आप लंदन में रह के आप सब्जियां कीनिया से बाई प्लेन मंगवा रहे हो, यहाँ आपका 3-3 लीटर की बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रहे हो, 5 के 6 बेडरूम को आप सर्दियों में हीटेड करके रख रहे हो. ऑल दिस एमिटिंग. तो यू वांट जो 2 या 3 गाय भैंस वाला है उसको वो एमिशन कर रहा हो वो बंद करो, पर हम ये लग्जरी एमिशन करते रहेंगे. सो दीज आर द एरिया. बाकी देखिए नाउ ओनली लास्ट, ये जो प्लांट बेस के लिए है, आई वांट टू ओनली से लॉट ऑफ टॉक इज देयर. पहली बात तो देखिए दूध, आपको साइंटिस्ट साहब बोलेंगे, मुझे इतना मालूम है, दिस इज ए कंप्लीट फूड. चाहे वो आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए या फैट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट, सब कुछ है. इतना कुछ किसी में नहीं है. नाउ से डॉक्टर प्रजापति ने कहा कि आदमी को दूध नहीं पीना चाहिए, क्रूरलिटी होती है. आई फील एज पर वेदा दिस होल यूनिवर्स इज मेड ऑफ 3 थिंग्स: अर्थ, प्लांट्स, हाँ जी, और ह्यूमन बीइंग और एनिमल. तो अर्थ पे प्लांट्स होते हैं, एंड दो प्लांट्स आर, उसका फ्रूट ह्यूमन बीइंग भी खाता है और एनिमल भी खाते हैं. ग्रेन्स आदमी का रहता है, उसका रेजिड्यू होता है, कैटल खाते हैं, एंड दे गिव 2 थिंग्स, मिल्क एंड द काउ डंग. द मिल्क इज कंज्यूम्ड बाय द ह्यूमन बीइंग एंड नेचुरली दैट्स व्हाई ही इज फीडिंग. एंड जो काउ डंग होता है दैट इज यूज एज ए मैन्योर टू दी as a micronutrient for the earth to grow the plants on that. So plants, animals and human being are co-exist to each other. अब एक को निकाल देंगे तो दूसरा रह ही नहीं सकता. बाकी डॉक्टर मोहन आपको ज़्यादा बता देंगे, मैं तो इतना बोलता हूँ, आपके यंगस्टर्स बैठे हैं सब, अगर फ्यूचर में आपको स्ट्रेंथ, मतलब विदाउट एनी साइंस, मैं तो अपने नॉलेज के बेस कह सकता हूँ, जो ओवरऑल एक्सपीरियंस, इफ यू वांट मोर एनर्जी, यू वांट मोर स्ट्रेंथ, यू वांट योर स्किन टू ग्लो, यू वांट योर ब्रेन टू वर्क वेरी फास्ट, यू वांट योर इम्यूनिटी टू इंक्रीज बेटर, कि आपको छोटी मोटी बीमारी ना हो, तो 30 साल की उम्र तक सुबह 2 गिलास दूध पिए, 30 के बाद 1 गिलास दूध पीजिए, घी खाइए, मक्खन खाइए, आपको ये सब कुछ मिल जाएगा. थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir.